discussion will continue tomorrow, and now we are taking up the special mentions. First, Honorable Naresh Bansal. Yes. धन्यवाद उपसभापति जी। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है, इस विषय पर मेरा स्पेशल मेंशन है। ये बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए देशव्यापी कानून बनाने के लिए आवश्यकता है। लालच, धोखा या बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यदि इस प्रकार का धर्मांतरण नहीं रोका गया तो जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यह नागरिकों के धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा बन सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो जल्दी ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। देश में काला जादू, अंधविश्वास, चमत्कार आदि के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हर हफ्ते सामने आती हैं। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो धोखाधड़ी व धमकी से धर्मांतरण से मुक्त हो। धर्म की आजादी हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसे धर्मांतरण बहुतायत में होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ये सब मदद के नाम पर होता है। यह मुद्दा किसी एक जगह से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे लेकर कानून है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। संसद में 3 बार हुए धर्मांतरण कानून पास कराने की नाकाम कोशिश हुई। 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था। बेहद गंभीर मामला है ये। फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए देशव्यापी कानून बनाने की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। धन्यवाद। Thank you very much, Naresh Bansal ji. Next is Honorable Lagar Singh Seroya. வணக்கம் சார். வணக்கம். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. மகிழ்ச்சி. Sir, demand to develop crafts village in the lines of Delhi Heart on Bangalore-Mysuru 10-lane expressway to protect the Channapatna toy industry. Sir, I thank the government for speedy work on the 10-lane expressway between Bangalore and Mysuru, which will be ready in 2 months. Once the expressway is ready with its several bypasses, the users will skip several towns along the route, such as Channapatna, which is world famous for the handcrafted wooden toys, handicrafts, and other towns such as Biddi, Madur, Ramnagaram, famous for cuisine such as Biddi Tatte Idli and Madur Vade, sir, etc. Employing thousands of skilled artisans, Channapatna, known as the land of the toys, largely depend on the tourists and commuters in cars, buses and tourist vehicles to sell their toys and handicrafts. However, when the highway is ready, thousands of vehicles will take the bypass, skipping Channapatna, with very few seeking them, as avenues to reach them will be blocked. Sir, the sudden customers drop will lead to the economic disaster for the nearly 3,000 artisans, families and thousands of employees dependent on the tourists and their livelihood, sir. Therefore, sir, I request the government to develop a crafts village on the lines of the Delhi Heart on the Bangalore-Mysuru Expressway
the craft villages or craft centers or centers can come up along the highways and provide space for Chanpatna artists to showcase and sell their toys, handicrafts, and also restaurants to offer their local food cuisine specialties. Such crafts village will be provide a market for the local business and food makers to protect their livelihood while becoming a platform for the millions of tourists to experience the rich heritage and culture of the Mysore region, sir. Or tatedli and Madhurvadi very tasty, I assure you, sir. Thank you, Lagat Singh ji. Very good point you have made. Thank you. Now, Honorable San Balbir Singh. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 25% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ। औसतन 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 12 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 12.5% ਸੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 28% ਲੋਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਸਟੱਡੀ 2019 ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 131 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Balbir Singh ji. Honorable Vivek Thakur. Please. Thank you, Chairman sir. वर्ष 2023-24 में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद देश के करोड़ों राम भक्त पवित्र अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहेंगे। यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए सरकार को दर्शन को सुगम बनाने हेतु प्रत्येक राज्य की राजधानी से अयोध्या के लिए दैनिक या साप्ताहिक ट्रेन चलाने की योजना पर विचार करना चाहिए, जिससे करोड़ों श्रद्धालु सुगम तरीके से अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धा की इस सर्किट को पूरा करने हेतु प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश और माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी बिहार के बीच ट्रेनों का नित्य परिचालन करना नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ ट्रेनों का परिचालन अयोध्या जंक्शन पर बढ़ने से यह आवश्यक है कि अयोध्या जंक्शन को यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनुसार अपग्रेड किया जाए एवं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के दर्शन से संबंधित सभी सुविधाओं की जानकारी स्टेशन पर ही उपलब्ध हो जाए। स्टेशन पर यात्रियों के खान पान, जल एवं आवासीय सुविधाओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। विदेशी पर्यटकों को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए भी विशेष कार्य योजना सरकार को बनाने की आवश्यकता है। पुनः इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Vivek Thakur ji. Honorable Maharaja Sanajoba Shamba.
Yes, please. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity, sir. Sir, my special mention is conservation of Loktak Lake and the Kaibul Lamjau National Park. Sir, it is an undeniable fact that despite there are various merit points of Loktak Hydro Project and the Ithai Dam, there are also several demerit points. Sir, it is true that the beneficiary states of Loktak Hydro projects are Manipur, Nagaland, Assam, and Mizoram. Out of 105 megawatt power generation in 3 phases of 35 megawatt each, only 35 megawatt has been used in Manipur, while the remaining 70 megawatt has been sold to the neighboring states. Sir, the merits of Loktak Hydro projects and Ithai dams are: number one, about 83,450 hectares of arable fertile lands have been affected and submerged underwater. Number two, socio-economic and cultural life of the surrounding people have been affected. Number three, sir, environment of Loktak Lake has abruptly changed. Loktak Lake is one of the largest freshwater lakes in the country. Now, sir, the lake is shallowing day by day. And number four, ecosystem and environment of Kaibul Lamjau National Park have also been affecting badly. This park is the only floating park in the world and home of Shanghai brow antler deer. This Shanghai, the rarest species of its kind, and the state animals of Manipur is found only in this park. Now the number of Shanghai is reducing below 250 and becoming endangered species. Sir, considering these alarming situations, I therefore request the Government of India through this House to take up all possible steps for the conservation of Loktak Lake and the Kaibul Lamjau National Park, especially for Shanghai, to save in the interest of the nation. Thank you, sir. Thank you, Laishambaji. Honorable Prasantananda, Doctor. Thank you, sir. My special mention is on development of NIMZ Kalinganagar. NIMZ in Kalinganagar has been accorded final approval by DPIIT, Government of India. Accordingly, JCDL, the existing SPV of Kalinganagar, is under restructuring as per requirement of NIMZ SPVs. Now, the SPV has been declared as JCD NIMZ for development of this NIMZ, which spreads over 163 square kilometers, envisages creation of 3,50,000 lakhs of employment with an investment potential of 1 lakh crore. This will substantially enhance the financial and social status of the region. For this, rupees 10,627 crore of infrastructure requirement has been estimated for creation of both internal and external infrastructure. A change in MIZ policy may also be explored by DPIIT on provision of grant for creation of various internal infrastructure and other statutory compliance studies, as well looking at the potential of NIMZ Kalinganagar and project cost involved in creating various required social and physical infrastructure. As of now, only cost of master planning is provided by DPIIT, and the change in policy is highly required for overall development of NIMZs in the country. Thank you. Thank you, Prasanta ji. Now, Honorable Ajay Pratap Singh. Namaskar, Deputy Chairman, sir. The heading of my special mention is to prepare regulation for sale and purchase of hormones which is used in animals and vegetables to get large yield. Here is my special mention. Sir, as the population of India is increasing, the food requirement is also increasing. Vegetables and milk
milk products are essential part of Indian thali. But in present days, nobody want to have cow or buffalo for required milk and milk products. The rising requirement of milk and milk products are in present days were met by the packed milk and milk products. These milk products and milk are obtained from that animal which has given a oxytocin hormones injection so that animal gives more milk, but milk which is obtained by such a way is harmful to human health, and also this process this process also affects badly to animal health. Like milk, vegetable requirement is also met out with same process. Vegetable like lauki, baigan, bhindi, kaddu, karela, turai, tomato, aloo, mooli, gajar were given a hormonal injection in the night, and next morning they achieve full length and size. Many vegetables growing farmer include in this type activity to get more profit in less time and also to fulfill the requirement of vegetable market. These vegetables are also harmful to human health. In other words, we can say the population living in urban area, metropolitan cities are eating poison daily. This slow poison is affecting their whole family. So I urge the government to look about this industry which is preparing such hormonal medicines and hormones which is affecting the large population of the country, and also make some regulations about such medicines and hormones for preparation, distribution and selling. Thank you very much, sir. Thank you, Ajay Pratap Singh ji. Now, Honorable Kailash Soni. माननीय उपसभापति जी, विशेष उल्लेख के माध्यम से बांधों में जमा सिल्ट निकालने के लिए स्थायी और निरंतर व्यवस्था के संबंध में विषय रख रहा हूं। मान्यवर मध्य प्रदेश के बरगी, बाणसागर सहित देश के प्राय बांधों में बड़ी मात्रा में सिल्ट डिपॉजिट हो गई है, जिससे बांधों में जल भराव उनकी सीमा से नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं जल भराव आधे से भी कम बांधों में जल भराव हो रहा है। इससे जल की आपूर्ति कम व बाधित हो रही है, जिससे देश की कृषि, पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रांतों में जल आपूर्ति को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा सिल्ट निकालने के लिए स्थायी व निरंतर चलने वाली व्यवस्था बनाया जाना लोकहित में अत्यंत आवश्यक है। सदन के माध्यम से भारत सरकार से विनय है, शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर निराकरण कर स्थायी मैकेनिज्म बनाएगी। साथ ही देश भर के सभी प्रांतों में जहां भी बांध हैं, उनकी वर्तमान परिस्थिति चिंताजनक है। सभी प्रांतों की यह समस्या समान है। प्रांतीय स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु नई व्यवस्था विकसित की जाकर देश भर में एक रूपता की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति वर्तमान में एक गंभीर चुनौती है। आगामी समय में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह समस्या और बढ़ने वाली है। संपूर्ण देश को दृष्टिगत रखते हुए सार्वदेशिक व्यवस्था बनाए जाने हेतु भारत सरकार से अपेक्षा है। Thank you, Kailash ji. Now, Honorable A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, my subject is exploitation faced by Swiggy, Zomato, food delivery boys and other gig workers. Delivery boys of
boys for apps like Swiggy, Zomato, and other workers who are engaged in such on-demand work are called gig workers. As per eStrom portal, the number of gig workers registered as on 28 January 2022 is 7,17,686. According to an estimate from study by Nidhi Aayog, in 2020-2021, 77 lakh workers were engaged in the gig economy. It's estimated that the gig workforce will number 2.35 crore workers by 2029-30. Gig workers constitute a significant and increasing part of our workforce. However, they were facing severe exploitation at the hands of large corporations. Companies are getting away with exploitation by denying even the label of worker or employee to gig workers and rather giving empty titles such as partner or executive. This enables the companies to deny any responsibility towards the gig workers. Further, though the flexibility in gig work is touted as a major boon, in reality, the workers are suffering due to having to work long hours, much beyond standard workday of 8 hours. Often, this is to meet targets set by the company, otherwise they may face penalties. They also have to do this just to earn meager amount, just enough for sustenance. We must not allow this super exploitation of gig workers to continue. Special legislation must be brought for the recognition of gig workers to extend the security of labor laws to them and to provide them social security, insurance, retirement pensions plans, and all benefits of regular employment. I urge the government to take necessary steps in this regard. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rahim. Now, Honorable Sujit Kumar. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, my special mention is regarding Central Assistance for Prevention and Management of Forest Fires in Odisha. Sir, through you, I would like to bring to the attention of the House the issue of raging instances of forest fires in our country. Sir, to give an example, Odisha reported 51,968 forest fires from November 2020 to June 2021. So close to over 50,000 forest fires in a span of 7 months, sir. The highest in India for the period, according to a reply obtained to a starred question in this very august House. However, the reasons for the occurrence of forest fires are both natural and due to anthropogenic reasons. But the effects are devastating to not only the flora and fauna of the forest, but also bears a direct impact on the tribals that are dependent on the forest for their subsistence. Sir, forest fires in the Simlipal Tiger Reserve in Odisha's Moyurvanj district has severely impacted not only the rich flora, but also several tribal communities living around the periphery of Simlipal forest have been impacted as they rely on the forest to earn their living. The cumulative effects of forest fires is more heavily felt on 3 particularly vulnerable tribal groups known as PVTGs. The tribes are Lodha, Khadia and Mankadia, as they live in Simlipal's forest fringe and are largely dependent on forest-based livelihood. Sir, the government of Odisha has been making commendable effort in this regard, and I would like to request the ministry through you, sir, for enhanced central assistance in the form of more financial assistance for various prevention and management measures, for creation and maintenance of forest lines, for engagement of fire watchers, for creation of water storage structures and strengthening of forest infrastructure, for procurement of firefighting equipment, and for soil and moisture conservation in these high-risk areas. Thank you, sir. Thank you, Sujit Kumar ji. Honorable Sushil Kumar Modi. महोदय, मेरा विशेष उल्लेख का विषय है सभी धर्मावलंबियों की महिलाओं के लिए विवाह की उम्र समान हो। महोदय, देश के अंदर ईसाई, पारसी, हिंदू धर्मावलंबियों से संबंधित अलग अलग विवाह कानून एवं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में
विवाह हेतु स्त्री के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मासिक शुरू होने के बाद कभी भी मुस्लिम लड़कियों के विवाह को उचित ठहराया गया है। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसे वैध ठहराया है। हाईकोर्ट का आदेश आईपीसी की धारा 375, पॉक्सो एक्ट 212 एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति या असहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने को अपराध माना गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 का प्रावधान 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। बाल विवाह निषेध कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रावधान उपरोक्त सभी कानूनों के विपरीत है तथा लड़कियों के विवाह की उम्र में धर्म के आधार पर विभेद करता है। विवाह कानून में उम्र का प्रावधान सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी नागरिकों के लिए विवाह की समान वैधानिक उम्र के लिए कानून बनाए और उसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करे। Thank you, Sushil Kumar Modi ji. Now, Honorable Kanaka Medala Ravindra Kumar. Huh? We have a form called associate. Yeah? We should also have a form to dissociate. Thank you. If you are not associating, it means you are not. Honorable Kanaka Medala Ravindra Kumar. Sir, my special mention regarding adequate compensation to tobacco farmers affected by Mandu cyclone, not wise. Sir, Honorable Deputy Chairman, sir, cyclone Mandus, which emerged from the Bay of Bengal, made landfall on December 9, 2022, resulting in heavy rainfall and squally winds in many parts of the states situated in the coastal area of Bay of Bengal, particularly in the state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This cyclone has caused devastating damage to the tobacco crops, and tobacco farmers in the state of Andhra Pradesh, particularly in Prakasam and Nellore districts, have suffered a huge loss due to damage of tobacco crops. Taking into consideration increasing global demand for tobacco, farmers in south coastal Andhra Pradesh cultivated it to over 53,000 hectares this Rabi season. But now there are unenviable position as cyclone Mandus destroyed the leaf of considerable extent. According to Tobacco Board sources, farms in the southern block soil region has faced the brunt of the cyclone and substantial damage have been caused the tobacco farmers and their crop. On an average, each tobacco farmer has invested an amount of around rupees 75,000 to 90,000 for tobacco growing. The investment in tobacco growing also includes obtaining loan from bank. Due to recent cyclone, the lives of the farmers, particularly the tobacco farmers, are in doldrums. Therefore, I urge the central government to provide adequate measures to provide relief to tobacco farmers and help them to come out of the financial crisis. Thank you, sir. Thank you, Ravindra Kumar Garu. Now, Honorable A.D. Singh. Not present. Honorable Riyaga Krishnaya. Not present. Honorable Sri Anil Prasad Hegde. Thank you, sir. I rise to speak on the subject I have selected is herbicides havoc. Sir, India needs to look at herbicides more carefully in its agricultural policies and regulatory regimes. The havoc of herbicides is not just about adverse environmental and health impacts, but also socio-economic. For crores of agricultural workers, mainly for poor women, manual de-weeding is a large source of employment. In rural India, weeds are not plants to be destroyed mindlessly, because weeds are also fodder, uncultivated greens, medicinal herbs, etc. Mindless registration and promotion of herbicides is going to
be detrimental and will defeat the purpose of promoting natural and organic farming in the country. Herbicides, drift-related damage will lead to losses and strife. In the USA, herbicide-tolerant crops, increased usage of toxic weed killers like glyphosate tremendously. Maximum residue limits were revised upwards, and consumers are dealing with more toxic residues in foods. Superweeds have emerged. Cropland is being abandoned by farmers. In India, sir, herbicides like glyphosate and glufosinate are being used in crops for which they have not been registered. Failure of the pesticides regulatory regime is apparent. Even though state governments in Andhra Pradesh, Telangana, Punjab and Maharashtra try to restrict, prohibit glyphosate, union government has not imposed a ban. A meaningless regulation was brought in for glyphosate without any enforcement capability and is now challenged in courts. Thank you. Thank you very much, Venkateshji. Now, Honorable Mohammed Nadimul Haq. Thank you very much, sir. Sir, I rise today to request the Honorable Minister of Health and Family Welfare to please consider the plight of foreign medical graduates and instruct National Medical Council to consider their genuine demands. I would like to draw your kind attention towards the injustice against foreign medical graduates who have successfully completed their education in various foreign universities and have cleared the foreign medical graduate exam in accordance with National Medical Council guidelines. All these students then applied for provisional licenses to their respective state councils to pursue compulsory rotatory medical internship as per the list of colleges available to them and started their internship in respective hospitals. The problem started when the National Medical Council on 21st October 2022 published the new list of approved colleges for interning students, and it was mentioned that the list was sent to state medical councils on 14th July 2022. So due to the misunderstanding or miscommunication that has taken place between the NMC and the state medical councils, the FMGs, that is the foreign medical graduates, interns, stand to lose a precious year of their careers as the hospital they are interning in are now considered invalid for CMRI. Therefore, I request the Honourable Minister to please consider the plight of these FMG interns and excuse these FMG interns who started their one-year compulsory medical internship prior to the publication of the new list, as thousands of interns all over the country will suffer due to no particular fault of their own. Thank you, Nadimul Haq ji. Now, Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. I rise to make a proposal for amending the operational guidelines of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in interest of the farmers of Orissa. Sir, with time, the revamped version of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has proven exclusionary and counterproductive. In Orissa, the insurance companies are making regular profits worth 900 crores and are yet to release 33% of the estimated claims worth 446.52 crores. While the ministry assured to take cognizance of the issue, it gave an incomplete picture of the pending claims. As per the ministry, Orissa had 189 pending cases as of August 2022 after an investigation by the state-level Technical Advisory Committee and the Technical Advisory Committee. However, figures in the House for the unstalled question number 660, dated 22nd July 22, showed a perfect claim settlement ratio for Orissa, excluding the pending claims. Further, there are systemic issues within the guidelines that require urgent attention. Firstly, Section 21.5 of the revamped operational guidelines categorize hailstorms, inundations, and so forth under the risk of localized calamity, with losses to crops like paddy being excluded for being hydrophilic crops. However, this is exclusionary to 95% of the paddy cultivating farmers of Orissa.
since longer exposure to water negatively impacts this crop. Finally, as per section 5.2.5 of these guidelines, covers crop losses due to wild animal attacks, but the state government is expected to provide a premium subsidy for this risk coverage, leading to a heavy financial burden on Odisha's exchequer. Thus, I urge the government to publish accurate data on pending claims in the House and revisit the operational guidelines. Thank you, sir. Thank you, Dr. Amar Patnaik. Now, Madam Geeta Alais Chandraprabha. धन्यवाद महोदय। भारत विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग करने वाले देशों में से एक है। आज प्रत्येक व्यक्ति तक मोबाइल एवं इंटरनेट की पहुंच है। लोगों को मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा से सुविधा के साथ साथ अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज बच्चों में इंटरनेट संबंधित खेलों की लत एक गंभीर विषय है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं आसान पहुंच के कारण आज देश के बच्चों तथा युवाओं में इंटरनेट संबंधित खेल के साथ लत बढ़ती जा रही है। देश के लाखों करोड़ों अभिभावक बच्चों में बढ़ रही खेलों की लत से चिंतित हैं। सरकार द्वारा ऑनलाइन खेलों का नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, परंतु इन खेलों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने हेतु और कठोर नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। गेम के आड़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देश का युवा इसका शिकार हो रहा है। यह खेल देश के युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। इसके दुष्प्रभावों के कारण परिवार टूट रहे हैं, माता पिता एवं बच्चों के बीच दूरी बढ़ रही है। अनेकों परिवारों में खेलों एवं सट्टेबाजी के कारण हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आई हैं। यहाँ तक कि बच्चों द्वारा परिवार के सदस्यों के हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि देश के युवाओं के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन गेम तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित विषयों को तत्काल नियंत्रित करने का कठोर प्रावधान बनाने की कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Geeta ji. Now, Dr. John Britas. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to raise this very important matter. Airline companies are fleecing the travelers, especially to Kerala, on the eve of Christmas and New Year by resorting to unscrupulous and oligopolistic practice of inflating the airfares. Skyrocketing prices for the vacation season have reached an all-time high of up to about 500% of normal fares for Kerala-bound flights from Mumbai and Delhi. These unprincipled practices are to be nipped in the bud so as to provide solace to Kerala diaspora in other states. They are in distress owing to the steep and sky-high skyrocketing airfares, and many are dropping their plans with a heavy heart of coming to Kerala during this vacation season. The recovery from pandemic-induced economic stress of Keralites working in other states is not at gathered momentum, and their precarious situation is further exacerbated by the unjustifiable airfares. Reluctance from the part of the airline companies in bringing their idle aircrafts, cartelization of airline companies are apparently the two critical factors behind this unprecedented escalation of airfares, apart from the hike in aviation turbine fuel price. It is pertinent to note that the government, through Air India, used to intervene in the past to operate more flights during peak season to reduce the fares. Hence, I urge the government to urgently intervene in the matter and regulate the airfare at the earliest, at least during this vacation season. Necessary rules and regulations may also be promulgated to ensure the pricing of air tickets in a fair and reasonable manner. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. John Britta. Now, Honorable Sanjeev Arora. Huh? Not present? Dr. Ashok Kumar Mittal. Please. Thank you, Chair. I rise to speak
regarding status of operation of Adampur Airport at Jalandhar, Punjab. पंजाब के लोगों को आदमपुर हवाई अड्डे की सख्त जरूरत है जो शेष भारत से कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। जालंधर का आदमपुर हवाई अड्डा पिछले 1.5 वर्षों से बंद है और कोई भी किसी भी विमान का संचालन यहां से नहीं हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से उड़ें, लेकिन पंजाब में इसके विपरीत हो रहा है क्योंकि 6 में से सिर्फ 4 हवाई अड्डे चल रहे हैं। और 18 जुलाई 2022 को मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि आदमपुर हवाई अड्डा ऑपरेशनल है। उड़ान योजना में ऑपरेशनल की परिभाषा भ्रमित करती है क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से आदमपुर से एक भी उड़ान शुरू नहीं हुई। दोआबा भारत का एनआरआई हब है और हवाई अड्डे के अभाव में उन्हें अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू किया जाए जिससे जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के निवासियों को सुविधा मिले और पंजाब का विकास हो। आदमपुर हवाई अड्डे के निरंतर संचालन से शिक्षा, उद्योग और पर्यटन का विकास होगा जो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभान्वित करेगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मित्तल। मैडम संगीता यादव। वड़क्कम सर, आपने मुझे एड्स एंड HIV वाले मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। माननीय उपसभापति जी, HIV पॉजिटिव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है। यह बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को अत्यधिक अपमान और वेदना का सामना करना पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर देश में लगभग 682 ART सेंटर और 1270 लिंक सेंटर हैं। लगभग 2.4 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं। भाजपा सरकार हमेशा से ही इस मुद्दे पर संवेदनशील रही है। सन 2004 में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने मुफ्त HIV की उपचार की घोषणा की थी। सन 2017 में HIV एड्स बिल पारित किया गया। माननीय उपसभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सभी HIV लोगों को, पंजीकृत HIV लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही नेशनल काउंसिल ऑन एड्स को पुनः सक्रिय किया जाए। ART सेंटर में जो काउंसलर के पद पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर HIV पॉजिटिव को ही नियुक्ति हो जो उनके दर्द को समझ सकें। पेडियाट्रिक ARV समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान निकाला जाए। इस बीमारी पर जागरूकता बढ़ाई जाए और इस मुद्दे पर डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग कराई जाए। धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। ऑनरेबल मोहम्मद अब्दुल्ला। Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, once our father of nation, Gandhiji, said agriculture and handloom sector were two eyes for India. Handlooms in the second largest sector in employment after agriculture. Until 2017, no government in our Republic India has levied any taxes on the handloom products, and there were subsidies and special schemes to promote the industry. Now this union government has scrapped the weavers welfare programs and imposed 5% GST on raw materials of handloom products for the first time in our Indian history. Sir, the Paris Climate Change Conference decided to reduce the temperature by at least 2 degrees
expressing concern over environmental conditions. In fact, the way we have before us to overcome these conditions is to promote handloom products, because handloom textiles are environment friendly even from the production stage and do not consume any electrical energy. All sources used in the handloom sector are over 90% eco-friendly. It is unfortunate that government, which spent thousands of crores of rupees on environmental protection, are not promoting eco-friendly products of handloom sector. Handloom artisan almost 67% have an income of less than 5,000 rupees per month. The weaving community is in misery due to this imposition of tax. Handloom weavers will become extinct in future if the government doesn't come to rescue them with incentives coupled with the abolition of GST on handloom products. Hence, I request this union government to exempt the GST on handloom products on humanitarian grounds and announce incentive for the welfare of the handloom weavers of this country. Thank you, sir. Thank you, Mr. Abdullah. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. With your kind permission, and with the subject line, Condition of Rohingyas in Detention Center, I wish to have my special mention on. Sir, the Rohingya refugees in Delhi's detention centers live in inhuman conditions. According to the personal accounts of several detainees, they are crammed up in overcrowded and unhygienic cells with no windows and are subjected to ill treatment, abuse, and unpaid manual labor. Away from the sunlight and restricted from using toilets, they develop several medical complications. However, no medical assistance is provided to them, sir. They have limited access to water and food and are not even provided with warm clothes during winter. Article 23 of the Constitution bans unpaid labor, which the Rohingya refugees are forced to do. The model conditions issued by Home Ministry require detention centers to have basic amenities such as electricity, drinking water, hygiene, beds, sufficient toilets with running water, communication facilities and kitchens, and these things do not exist in these detention centers. Apart from this, India is also a party to various human and child rights conventions that are blatantly ignored in Delhi's detention centers. It is of vital importance that the victims of persecution who seek asylum in our country are treated with respect and dignity. So, after making statements like India has always welcomed those who have sought refuge in the country, the government should pay attention to the disturbing and distressing conditions of the Rohingya refugees and take immediate action. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you, Professor Manoj Kumar ji. Now, Dr. Ashok Bajpai. धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, आपके माध्यम से मैं कानपुर होजरी उद्योग के समग्र विकास हेतु कानपुर में होजरी हब स्थापित किए जाने के संबंध में ये सूचना सदन के संज्ञान में देना चाहता हूँ। महोदय, एक समय में कानपुर के कपड़ा उद्योग की तुलना मैनचेस्टर से की जाती थी। यहाँ बड़ी संख्या में कपड़ा मिले थी, लेकिन सरकारों की अदूरदर्शी नीतियों के चलते कानपुर का कपड़ा उद्योग आज मरणासन स्थिति में है। कानपुर के होजरी उद्योग की तुलना तिरुपुर और कोलकाता के समानांतर होती थी, लेकिन अब तिरुपुर होजरी उद्योग एशिया का सबसे बड़ा होजरी निर्माण केंद्र बन गया है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए के होजरी उत्पादन वहाँ प्रतिवर्ष होते हैं। वहीं कानपुर होजरी उद्योग को सरकारी संरक्षण प्राप्त न होने से तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में होजरी उद्योग की लगभग 2000 इकाइयाँ हैं और इस उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, परंतु कानपुर में न तो कोई होजरी ट्रेनिंग सेंटर है, न टेस्टिंग लैब है, न आधुनिक मशीनें हैं जिससे होजरी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। कानपुर की बंद पड़ी कपड़ा मिलों में होजरी हब की स्थापना करके सूक्ष्म और लघु श्रेणी के उस उद्योग को बढ़ाए जाने की अपार संभावनाएं हैं। इसके विकसित होने से बड़ी संख्या में रोजगार विकसित होगा और प्रतिवर्ष करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा एक अध्ययन भी कराया गया जिसकी डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट भारत सरकार में लंबित है। इस रिपोर्ट के लागू होने से
कानपुर के होजरी उद्योग को नई संजीवनी मिलेगी और होजरी हब स्थापित होने से कानपुर के गुणवत्ता परक होजरी उत्पाद देश विदेश में अपनी पहचान बना सकेंगे तथा हजारों नौजवानों को रोजगार दे सकेंगे। अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कानपुर में होजरी हब स्थापित किए जाने की सरकार से मांग करता हूं। Thank you, Ashok Bajpai ji. Honorable Kartikeya Sharma. Thank you, Vice Chairman, sir. I rise to mention the following matter of urgent public importance in the House. On 25th May 2022, the central government has announced that 5 ESIC hospitals will be set up in the districts of Hisar, Ambala, Karnal, Sonipat or Rohtak and Panchkula of Haryana to ensure affordable healthcare for people working in the unorganized sector. From newspaper reports, I've come to know that Honorable Prime Minister has instructed the Employees State Insurance Corporation to expand its medical infrastructure by enhancing its reach to all 740 districts of the country by using its more than ₹1 trillion reserve fund, lying mostly in the fixed income instruments with the banks. The foundation stone was laid for one of the 500-bed ESIC hospital at IMT Manesar, Gurugram. At present, only 15 hospitals have a tie-up with ESIC in the state of Haryana. The load on MRI, CT scan and other imaging tests is very high, as patients have to wait for more than 3 months to get these tests done. I am very sorry to mention that the state of affairs at the region of ESIC health centers, which cater to employees of private and government sectors, is very bad, as they are plagued with an acute shortage of doctors and paramedical staff. Lack of required strength of doctors, especially specialists, forces the patients to seek treatment in already overburdened government-run hospitals or private hospitals of which they have to pay a hefty fees. I request the government to take immediate steps to set up the hospitals and do the needful to fill the vacant posts of doctors and paramedical staff urgently. Thank you. Thank you, Sharma ji. Dr. Sivadasan. Karti, very good, Karti. Respected Chair, my special mention on development of Kannur Airport. Very important. Sir, there is a need to promote the development of Kannur Airport by allowing more international flight. Kannur Airport has an excellent infrastructure meeting international standards. Hence, it is the need of the hour that flights to all important international destinations should be permitted and promoted. The airport should be included the point of call list, which is essential for its advancement. Hajj embarkment should also be allowed from the airport. The Union government is requested to take prompt action on the issue so that Kannur Airport is able to utilize its full potential and contribute the development of the country, industry, tourism and mobility in the region. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sivadasan. Now, Dr. Fauzia Khan. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, solid waste can create very serious health problems and an unpleasant living environment if not disposed of in a proper and safe manner. Such waste may then also bring breeding sites for insect vectors, pests, snakes and vermin that increase the risk of disease transmission. It may also pollute water sources and the environment. It is estimated that 10,000 hectares of urban land are locked in dump sites in India. Further, only about 75 to 80% of the municipal waste gets collected, and only 22 to 28% of this waste is processed and waste treated. The proliferation of airless open dumps of garbage leads to emissions of methane, which absorbs the sun's heat, warms the atmosphere, and contributes to global warming. Therefore, there's a growing need to look for alternative mechanisms for disposal of solid waste, some of which may come to include composting, which is a biological process in which microorganisms such as fungi or bacteria decompose in the presence of oxygen. The degradable organic waste, pyrolysis, which describes the process of burning solid wastes, but in the absence of oxygen, thereby producing charcoal, tar,
methyl alcohol, acetic acid, acetone, which can be used as fuels, and vermiculture, in which earthworms are added to the compost. Such measures are critical to ensure safer disposal of solid waste generated in the country. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hosea Khan. The House stands adjourned to meet at 11:00 hours on Tuesday, the 20th December 2022.